So we'll continue on for photoelectric effect. Photoelectric effect. We'll write this down first. So the photoelectric effect was first observed by Henry Hertz in 1887. Now this does not matter because the date and time does not matter in exams. That is engineering exam. When polished metal plates are irradiated, he observed. Irradiated means when they're struck by light and radiation comes out of it through the like radiation is put on it in the form of any form of light, ultraviolet light mostly. They emit electrons. So he observed that they emit electrons, then they are called photoelectrons. So this the emitted electrons thus can produce a photoelectric current. If we illuminate one of the metal plates with photons of energy above the work function value of the metal, the electrons absorb the photon and escape from the surface of the metal. As the metal is with an evacuated tube, these electrons will move off the surface with whatever kinetic energy they possess, in whatever direction they are emitted. Some will move across the tube and hit the metal plate at the opposite end of the tube, and the ammeter will register a current. The current gives no indication of the kinetic energy of the photoelectrons, only the number of them released per second. So what do you understand from this? Is let's make a diagram. Let's make this diagram. And either zoom into this diagram if you want, or it's not like this for the diagram. The same diagram. So just yeah. So you can just yeah, zoom into whatever. Yeah. So let's make this diagram. So as you can see, there is a tube, right? There's a tube. So let's make the tube first. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do. This is the tube, and this is the plate of electron. It's a positive terminal, and there's a negative terminal. Positive terminal is going out from the left side, and it is both of them are connected parallelly to a voltmeter. I think because normally voltmeters are added parallelly to like understand the voltage. What is it? Calculate the voltage of the this or the amount of basically energy supplied per unit of charge or whatever. There's light falling on this. Uh, yeah, stop worrying about those things. Let's go ahead. So we have got then electrons which are coming out, right? So this is the evacuated quartz tube. Evacuated because basically there's no this is the it is almost vacuum, so evacuated. So evacuated because evacuated where you remove everything out, right? Similarly, you remove all the air out of this. That's why it's called evacuated quartz tube. Light is there. The photoelectrons, we can write them as electrons because they just photo. Then we make the next setup, which next part of the setup, which is downwards. We add a resistor, which is variable resistor. There's a this over here, arrow. Then there's a resistor, and there is in somewhat sense there.
there is a variable resistor and there is a just to vary the current and stuff. So I think, but mostly it's going to fix that. The resistor and the variable resistor are in series, but that is parallel to the entire thing, and the ammeter is actually in series with the inductor. If you think about it, because current is only through the dependent, and voltmeter is measured backward because it is the difference between two what is different between two sides, the cathode and the anode. It's positive and negative, so that's it's backward. Here is just like going from here to here. Correct. However, the experimental setup to show that the energy they possess is kinetic energy. We apply electric voltage across the tube to oppose the travel of the electrons between the electrons. It is an application of low negative potential. Electrons are repelled and some of them go up, but others have high kinetic energy, still able to reach it. As the negative potential increases, the less and less electrons are able to reach the alpha or the tube. And finally, we go on the the photocurrent becomes zero. This potential difference is called as stopping potential, which is related to the maximum kinetic energy of the ejected photoelectron. The fastest electron will be able to reach the negative plate just before the photocurrent reaches zero. Because they are trying to just push through the most amount of repulsion. That is the reason it will be the fastest or the most maximum kinetic. So let's go through the document for this one. So a series of experiments were found in the late 19th century. So we have photoelectric effect. The experiments are you already seen. This frequency is mu and intensity I. The material of the emitter and cathodic potential V can be varied. Some of the electrode because of this mentioned resistors. Some of the photoelectrons that emerge from the related surface have sufficient energy to reach the cathode. This is the anode. The anions are negative, so this becomes the anode. This is negative in the cathode. Despite of this negative polarity and constitute the photocurrent measured by the ammeter in the surface in order to reach the collector of the energy. This is the current is the emitter, positive one to negative. Is equal to more than electric potential that they must gain in order to present the emitter and collector. Right. Half mv square is greater than equal to ev naught. Is the stopping potential. Threshold potential that is to be stopped the electrons constitute the photocurrent. So this is always going to be higher than that. But once it is equalized, the incidence or the time lag between the incidence of light and emission is 10 to the minus 9 seconds. It's instantaneous. There is a threshold frequency for the emission of electrons, photoelectrons. If the light beam contains no photons, having frequencies higher than the threshold, there is a threshold frequency for the emission of photoelectrons. There is a threshold frequency. Uh, if the light beam contains no photons, having frequencies higher than this threshold, no photoelectrons will be emitted, regardless of the intensity of light source. Threshold frequencies varies with different metals. So as you see, this is constant here. The photoelectric current is different because of the retarding capacity for the frequency different. Hence the retarding. These are just two graphs to determine the magnitude of the photocurrent is independent of the frequency of light, but it is yeah, but the magnitude is going to be the same as you see, but the retarding potential varies. What is detected proportional intensity? So here the frequency is same, but because of different intensities, there are different photoelectric currents. Here, the higher the frequency of the light, the more the energy photoelectrons and have, and the higher the value of some. So here, even though this all have same photoelectric current, but they are different even V2 frequencies. So higher the frequency, so there will be more retarding potential needed because of this formula. So now just remember this graph if you want to make this graph.
Now let's go ahead. Quantum theory of light. I think this constitutes whatever this is. Then we are going to go on to count them. Okay. So firstly, let's go through the PPT, the quantum theory of light. In 1905, Einstein realized that the photoelectric effect could be understood in the energy in light and is not spread out over wavefronts, but is concentrated in small packets or photons. Right. Firstly, um, uh, uh, yeah. So in 1905, Einstein realized that the photoelectric effect could be understood if the energy in light is not spread out over wave fronts, like in Huygens, you remember Huygens and wave optics and stuff, where they had wave fronts for light, but is concentrated in small fractions of photons. So for the photoelectric, normally they are in wave fronts, but for the photoelectric effect, they are suggesting that it's not a wave front or a wave. It's more like packets of light which are photons, more like particles of light. The term photon was coined by chemist Gilbert Lewis in 1926. So basically, they could be called as small packets. Small packets is what Einstein would have used. Photons is what Gilbert would have used. Because later they named it to photon. Each photon of light uh, of frequency has energy h. I think the reason could be simple, very where photographs in 1822. Okay. Okay, I'm not exactly sure. I think due to that, then they would have changed it afterwards. Each photon of light at frequency has the energy h mu, the same as Planck's quantum energy. Uh, EM wave energy, electromagnetic wave energy, is concentrated in photons and not spread out. There should be no delay of in emission of photoelectrons. As you can see, 10 to the minus 9 seconds. That's so fast. That's like almost instantaneous. That is very relative because of that. It was written somewhere over here. Yeah, 10 raised to minus 9 seconds. It's so instantaneous. So this is the experiment part where they are explaining the experiment. This is what conclusion they got out of that. All the photons of frequency have the same energy. All photons of frequency, same energy. So changing the intensity of a monochromatic light, beam light will change the number of photoelectrons, but not their energies. So over here, as you could see, changing the intensity of light changes the photo current, the amount of electrons released, but not their individual energies. सबका एनर्जी सेम रहेगा बट देयर इंटेंसिटी will just increase the number of particles. That's the reason the retarding potential. But changing the frequency itself will change the number, what is it, the energy per unit of photons, which will then have different varying retarding potentials. So that's what you have to understand. And what you can write also. Then we have got, where is it? Yeah, the higher frequency, the greater the photon energy h nu. So as I said over here, the higher the frequency. So mu1 has the highest frequency. Mu1 has the highest energy. So when it has the highest energy, as you know, the maximum over here was written. So wait. The maximum give me a second. I think it was, so what it basically means is that the last electron which comes, the last packets of photons, electrons which are emitted have the maximum kinetic energy. So when that has the maximum, it has the most highest retarding potential because they have a highest frequency. Because E equal to h mu naught and mu naught is directly proportional to E. So the highest mu is equal to what do you say? The highest kinetic energy.
Now, so the higher the frequency, so here there's a graph that is maximum. What does it tell? Above the critical frequency, which varies say V naught, half every EV naught, and EV naught is equal to H mu. So H mu, so mu is EV naught by H or whatever you want to call it. So for cesium and sodium and calcium, whatever. See what it says that which varies with each metal photon and energy range from zero to certain maximum value, 3 electron volts over here like per electron or whatever. Substation cannot be still classically with transfer energy. It gives the density of light. So here we disprove that theory that intensity of light does not matter, the frequency of light matters. These two words. Frequency पे if constant frequency पर intensity बढ़ेगा तो the photon conversion, the number of electrons. For the energy to change, the frequency has to change. And the frequency when it changes, the retarding potential changes because it is dependent on the energy. For your photoelectricity. This is much more concise for you, but here it's explained much better. Okay? Let's read this and finish off with the theory of that. Then we'll go to Compton. Let's read through this, understand it, and then we'll go on to Compton. And Compton के बाद we'll yeah, Compton we'll kind of do both of them together. We'll read the entire Compton, then we'll read these notes, understand it. Let's go on to the next. So, so theory of photoelectric effect due to Einstein. The mystery of the photoelectric effect was explained by Einstein in 1905, for which he was awarded by the Nobel Prize in 1921. Oh, oh. Okay, so based on Maxwell's suggestion, the radiation is emitted as discontinuously as little bursts of energy called quanta. Einstein found that the quanta associated with a particular frequency mu of light have the same energy E proportional to the mu, E equal to h mu. H is the Planck's mass is 6.63 to 10 to the minus 34. All the things are, you remember this. So this is this is from Wien's law that it is inversely proportional to temperature, lambda mass. So the most intense mass is much shorter than the uh, Stefan, whatever. Or Compton, Compton effect. I don't even know start. So Compton effect. First, we'll read through whatever this bullshit is. Tell the wrongly. So this is new thing. So Compton is at the so we read that through that in the from the PPT and then we'll go into the notes till I think the wrongly that will over. Yeah. So let's do that. So the Compton effect is it's a carried out of like it's a set of carried out experiments from 1923 to 1924, scattering X-rays of a carbon target. X-rays corresponds to photon energy because X-ray is a form of electromagnetic radiation.
and photons are in every part of every electromagnetic radiation, or the ones which is visible at the visible light spectrum. Its energy is in the range from 100 eV to 100 kilo eV. The goal was scattering X-ray photons of free photons of the free electrons, and with some qualification, the electrons in the atom behave this way. So over there they use normal light, I think, or high frequency light, but here they are using just X-rays. That's what the main difference is. The goal was static X-ray photons, static X-ray photons of the free electrons, and some with some qualification, basically some qualification, some energy. The electrons in the atom behave this way. According to the classical electromagnetism, the charged electron will begin to oscillate at the frequency of the incident wave. Frequency is mu, so it will start to what is h mu pe, it will start oscillating at that energy, and therefore radiate further electromagnetic waves at the exactly same frequency at the incident or direction. So what it means is a source of chromatic X-rays, collimators there. Collimator, I don't know what they are, but they are just kind of, I think, intensifying the this towards. So this is like, as you see, there are many beams. It is just, it takes one beam first. Then to avoid any kind of misconception ahead. Then there's a path of a spectrometer. Then there is uh this particular thing. There are scattered X-rays, unscattered X-rays. So the scattered we have unscattered. But the scattered ones also have the same frequency. They are just diverted a little. That's what they're calculating. Relative intensity phi is equal to 0. Relative intensity, this is delta lambda. Delta lambda we have the difference in wavelength. Phi equal to 45, phi equal to 90, phi equal to 135. Experimental confirmation, or the greater the scattering of angle, the greater the wavelength change in a hot. So remember that. So this is kind of this like पहाड़ बनाना है. इधर एक पहाड़ बनाना है, इधर दो सब बम्प वाले पहाड़, इधर और बाकी सब सेम दो बम्प वाले पहाड़, बट से वो बम्प को बड़ा कर दिया. डेल्टा लैम्डा को बड़ा कर. The loss in photon energy is the gain in electron energy. H mu minus H mu naught, H mu minus H mu dash is equal to Ke. From chapter 1, we recall the momentum of massless particles is related to its energy of formula E equal to Pc. Pc is, what is it? P is, I assume, the momentum, which is mv, so mvc. So the energy of photon is h mu. Its momentum would become h mu by c. So the incident E equal to h mu, P equal to h mu by c. एक photon electron पे गिरता है, E equal to mc square, P equal to 0. और इसे inelastic collision इधर जाता है scattered electron. P equal to P जो इधर आया था, और फिर E equal to mc square plus pc square का रूट. mc square का the whole square plus pc square the whole square का रूट. So scattered electron, उस photon, scattered photon इधर आता है h mu dash और h mu dash plus c. So h mu dash plus c has sin phi and cos phi. P has P cos theta, P sin theta. I'm not exactly sure what this is, but I just have to tell you that remember this. This is an important diagram, so just remember this one. Just more. Fine. The initial photon momentum is h mu by c. The scattered photon momentum is h mu dash by c, as you see. h mu by c, h mu by c. इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो दूसरे को अफेक्ट करेगा, दूसरा तरफ जाएगा, तो ऐसा. Initial and the final electron momentum are respectively 0 and p. ओ अब भी समझा मुझे, तो इसका ओरिजिनल ऑलरेडी ये था, E इक्वल टू इसका P इक्वल टू 0. तो ये क्या है ना, फोटॉन, ये थोड़ा इधर छोड़ता है, और ये इसका प्लस इसका स्क्वायर बन जाता है, ये पीसी स्क्वायर.
इधर बस एच म्यू को पीसीस को ले, बिकॉज जो भी इसका मोमेंटम है। हाँ, initial photon momentum is h by c, as you can see here, and the scattered photon also h p dash by c, and the initial and final electron momentum are respectively 0 and p. Then the original photon direction, the initial momentum is equal to final momentum, h mu by c plus 0 is equal to h mu dash by c cos phi downwards plus p cos theta. तो ये डायरेक्शन है ना, ये प्लस ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन, वो है अपना इधर इसका रिलेटेड परपेंडिकुलर टू दिस इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, बिकॉज इसकी तरफ कुछ नहीं है ना, कुछ देखा तो वाई की तरफ कुछ है ही नहीं। तो जीरो इज इक्वल टू एच म्यू डैश बाई सी साइन फाई वाई डैश पी साइन थी। So this basically is the same thing. So nullify. So Sira Yadav just is equal to each other. The angle phi in between the direction of the initial and scattered photons, um, and theta between the direction of the initial electron and scattered electron, initial photon and recoil electron, same thing. From equations 2.14 and 2.16, 2.14 है ये, 2.16 है ये. We got PC cos theta equal to h mu. इधर c मल्टीप्लाई करेगा, इधर इधर जाएगा, so PC sin theta PC sin theta equal to h mu, फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग वही किया, तो जब स्क्वायर किया पीसी स्क्वायर आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, पीसी स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू स्क्वायर माइनस ये अभी एक्सपांड होता है, फिर वापस वही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाता है, सीधे एच म्यू स्क्वायर आ जाता है, और ये माइनस टू एच म्यू डैश कॉस थीटा. नेक्स्ट वी इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल एनर्जी पार्टिकल कि ए इक्वल टू ए प्लस एम सी स्क्वायर. ओके, तो मालूम. दिस इज जस्ट, व्हाट द heck is this? Like really, what kind of baloney is this? This is just too complicated to understand. Right? It's so much baloney going here. फाइनल ये है, जो भी है, एच बाई एम सी हमारे सोर्स. सर डेरिवेशन में पहुंचाने बहुत खराब. तुरंत दूसरा ले लो जवाब दस, इसको लिखना ही पड़ेगा शायद. whatever इसका एंडिंग है, सिंपल वो जानने वाला. यार किधर तो मेरा दिमाग सट गया. मैं पीवाई क्यूज करेगा, इसका क्वेश्चन करेगा तब देखते हैं. अब डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली फाइनल 35 45 खत्म ही कर देते हैं.
कहीं जाने वाला है, सब जल्दी जल्दी पढ़ लो, खत्म करके सब नेक्स्ट यूनिट क्लास। तो दिमाग कुछ शांत। चल थोड़ा देखते हैं। Well, I'm even bothered one side freshman this one. Actually, this is not. No, I'm not saying that. But sometime everyone go sometime if at least the derivation part of it was lit. Not part of the semester kind also lit. फिर economic hypertension से जाता है एक ब्रेक लेने से बराबर जो स्टार्ट कर जाता है फिर काउंटर को जाएगा करके वाला वीकनेस फिर economic पर economic को ना फिर आगे बढ़ के खत्म हो गया डिस्कॉर्ड तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो एक बार पूरा पढ़ लेंगे हम लोग फिर जब तक फिर नहीं लेंगे फिर ऐसे सॉरी में सोच के खत्म करें अभी हो हरी ये हरी तो है बट यू नो वी शुड नॉट डू मच नाउ so we have to slowly kind of do this wherever so इसको मैं कभी बंद नहीं रहा तो मैं एक सिंपल काम करता हूँ बैटरी में जाता हूँ बैटरी सेटिंग्स एक तुम लोग नहीं देख सकते ठीक है और ना ठीक ऑन बैटरी एटलीस्ट एक 20 मिनट ठीक चलिए अभी थोड़ा देर में वापस एक बार पूरा कंटेंट स्टार्टिंग से अच्छे से ये पढ़ तो लिया समझ तो आ गया क्या है ये डायग्राम पहले बनाते हैं
फिर हर एक इक्वेशन आराम आराम से लिखते हैं, क्या चल रहा है। सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे, ये सब बकवास नहीं लिखेंगे जो भी ऊपर है। सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे पूरा सब, और ना देखेंगे क्या हो रहा है। हर एक चीज को पूरा तरह समझने, फिर खुद से पूरा पूरा इक्वेशन बना के और खुद डिराइव कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो उसके क्या होता है, ऐसा लगता है कि खुद हम साइंटिस्ट है, डिराइव कर रहे हैं, तो ऐसा एक साइंटिस्ट अपना बना उसको आपको बना लिया, जब तक ये आप करेंगे तो आपकी लड़ाई होना चाहिए। तो आप कर पाते हैं हमारा जो भी हमारे को एक ब्रेक ले रहा है, कर लेता हूँ। See you after the break. Yeah, see you after the break. I will come back and teach complex derivation diagram and continue on from de Broglie hypothesis. I don't know what I meant. चलो टाइपिंग ही गलत हो रहा है, ऐसा थोड़ा सा ठीक है। तो आगे थोड़ा रुकते हैं। कॉम्पेन पे रुकते हैं। काफी बार में काफी अच्छे से पता चला, ये हमारे लोग नहीं है। इनके साथ रिवाइज करते हैं, हमारा टेस्ट 3 रॉकी में 3 रॉकी हो गया। 3 रॉकी में अच्छे से सब लोग बनाती है। 3 रॉकी के बाद तो जो भी आया गवर्नमेंट हो गया, क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड यूनिट पे ऐसे ही करते रहना। और तो आप लोग कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा कपड़ा डाल लेते हैं ना इधर। ऐसे पापा बोल रहे डाल देना, वो फिर रह जाएगा सही। हाँ हाँ, पीछा है ना। हाँ हम लोग सबको रास्ते को शादी में जाते थे, शादी में जाते थे। सबसे पता है चला तो हम कल वेट पर उसको समझ जाता है बात। हाँ हम बोला कि ज्यादा तो बात कर, तुम्हाला खरंच सुकवायचे ना कपडे। हँगरला वगैरे लटकवून सुकवते. आता ह्यांची आंघोळी ते निघतात.
I am back. So, we were going out for Compton. Let's just drink some water. What do you think of water? What next to be? Hmm. Hmm. Right. So, um, let's pause this, open up this, fine. So, let's go on and start with Compton. The this so first let's make this diagram. So for this diagram to be made, we need an incident light. Right. So first let's sharpen the pencil. Okay. Sharpen. Now let us scale. But no, first draw an incident photon wave like normal. Slow and steady. And incident photon. This is the target electron. Then this is equal to mc square. P equal to the initial conditions. Now let's draw a plane. Then we have got the target is hit now. So we have got a scattered photon, right? Draw that wave, scattered photon, have a phi angle with it. For that, the E is equal to h mu dash and P equal to h mu dash by C. And for the target electron, there's a scattered electron, that is a straight line with an electron. Do, 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 do. Scattered electron, which is E equal to root m square c to power 4 plus p square c square and p equal to p. Now, this is diagram A, this is diagram B. Now we'll draw a schematic diagram of this one, which we're just using angles and rules and whatever. So we have got h mu dash by c phi. So there's h mu dash by c cos phi, and there's a p, which has a p cos theta and p psi theta.
h mu dash by c sine phi. And this is h v by c. Now let's do the let's read and write the equations. If the initial photon frequency is mu and scattered photon frequency is mu dash, then the loss of photon energy is equal to gain in electron energy. Okay, so first is h mu minus h mu dash is equal to ke. So h mu over here minus h mu dash over here because photon है इसमें कट रहा है बचाओ इसमें जा रहा है तो वो ए है टेक्निकली वो पीसी है since the photon rest mass is zero momentum relative energy is given by p equal to e by c which is h mu by c. Here therefore the initial and scattered photon moment are h mu by c and h mu dash. Initial h mu by c and final is h mu dash. Wait, h mu dash by c. Uh, Whereas the initial final electron momenta is mc square 0 0 obviously and p. As momentum is a vector quantity in the collision, it must be conserved in each of the two mutually perpendicular. In the photon direction बोले तो ये समझिए भाई तो in the original photon तो इसका original photon direction में h mu by c प्लस जीरो ठीक है क्योंकि ये h mu by c है और इधर ये जीरो है इज इक्वल टू ये इसका दोनों का एडिशन h mu by c h mu by c cos phi प्लस p cos थीटा तो देखो जब p cos थीटा और ये h mu तो ये एफ यू आई सी प्लस जीरो जो ये डायरेक्शन में था इज इक्वल टू ये प्लस ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट नाउ एंड द परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन तो ये तो बहुत सिंपल है ये तो जीरो ही था ऊपर नीचे तो दैट इज जीरो प्लस जीरो इक्वल टू दिस माइनस दिस ठीक है ये नीचे का डायरेक्शन माइनस तो जीरो इज इक्वल टू एच पी डैश बाय सी साइन फाइव माइनस पी साइन थीटा इधर तक ठीक लग रहा है ठीक है नाउ मल्टीप्लाई here the angle phi between the directions of the initial and scattered photons and theta is the initial photon recoil whatever. Now multiplying the equations 3 and 4 by c and rearranging them we get ये the equation simple. तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये किया तो पीसी तो पहले में आया पीसी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस फाइ एंड सेकंड आया ये तो सिंपल है रिलेटिवली सिंपल ये तो से उस तरफ लेके और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वाले में पीसी साइन थीटा इज इक्वल टू एच म्यू डैश बाय साइन एच म्यू डैश साइन इधर तो भी ठीक है आफ्टर स्क्वायरिंग एंड एडिंग ठीक है तो पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू एच म्यू उसका वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस फाइव और बिकॉज उधर एक एच म्यू डैश कॉस फाइव स्क्वायर है एच म्यू डैश कॉस फाइव स्क्वायर एच म्यू डैश साइन फाइव स्क्वायर तो दोनों को ऐड करेगा एच म्यू डैश स्क्वायर इसीलिए उसको सिर्फ एच म्यू डैश स्क्वायर लिखा है पूरा नाउ यूजिंग द टू रिलेटिविस्टिक ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ये पार्ट इसके बाद से देखिए क्या है ना बाकी सब समझ भी जाएगा ये बीच का पार्ट इधर नहीं समझा है इसके सब बाकी समझता नहीं सिंपल है तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस तो
We now use the two relativistic energy equations of a particle. That is E equal to ke plus mc square. तो ये एक इक्वेशन है। ये क्यों है, क्या है, मुझे अब इधर क्या है कि हमको इतना मालूम है, सेंस बना रहा है। ये दोनों इक्वल करते हैं। अब कही क्या ही था, ये कही कहा गया। फिर ये वाला कही। ओके। ओके, मुझे समझ गया। तुम देखो बच्चा एनर्जी कितना, गेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज ये, और ये एक इनिशियल ऑर्डर था एमसी स्क्वायर, तो दोनों का ऐड कर दिया उसने। समझा? हाँ, अभी मुझे समझ। फिर ई, और ये दूसरा वाला कहाँ से आया था? ये तो ऑलरेडी शायद था ना। ये तो I don't know, कहाँ से था? फिर एमसी तो दिख रहा नहीं है। ये पहले तो रूट में था, पहले तो रूट में था ना। स्क्वायर। अरे यार, ये तो सब सारा उल्लू लोग हैं, क्या ही बोल। ये लोग ना, ये इक्वेशन ही गलत लिखे। ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है। ये देखो, कर दिया। और एक क्यों है? ये एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर प्लस इसका पी सी स्क्वायर, क्योंकि एच म्यू एच इज ई इज पी सी। तो वैसा किया है। समझा अभी? क्या भाई, मैं क्या ये इसको तो बैठ। तो ये स्क्वायर रूट, मैंने सोचा कि नेक्स्ट इक्वेशन में इसका स्क्वायर करने पे यार बोल रहे कि ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसका वापस स्क्वायर क्यों करेंगे? बोले स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करके। हाँ, ये लिखा ही गलत है इसीलिए कंफ्यूज। है ई प्लस एम सी स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ दिस, हाँ दिस इज सिंपल इक्वेशन, ये दोनों को इक्वेट किया, ये स्क्वायर रूट है यार, तो ये स्क्वायर रूट किया तो इसको स्क्वायर किया तो इसीलिए आया। और ये कहाँ से आया, ये इधर से, दिख रहा है? और ये भी कहाँ से आया, ये देखो। ई इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू पी इंटू सी है, तो इधर जाएगा तो पी सी। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक एक वेक्टर ऐसे, और एम स्क्वायर सी स्क्वायर जो ऑलरेडी था, तो उसका मैग्नीट्यूड ई इज एम स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो इस तरफ देता है। जो बचा है वही एच म्यू है, और ये पी इधर जाने वाला ना, तो उसका तो पी तो यही है। चलो, कुछ तो समझ आया। तो ये आया, फिर तो ठीक है, फिर पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू के ई स्क्वायर प्लस टू एम सी स्क्वायर, वो हार्ड फूड पे आया है। और सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन वन इन इक्वेशन एट, तो ये इक्वेशन वन क्या था, एच म्यू डैश माइनस एच म्यू, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश इक्वल टू के।
अब इसमें ये कैसे आ गए, के ई को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एच म्यू माइनस एच म्यू डैश, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच म्यू का होल स्क्वायर माइनस टू एच म्यू इंटू एच म्यू डैश प्लस एच म्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस टू एम सी स्क्वायर एच म्यू माइनस एच म्यू डैश का होल स्क्वायर. अब पुटिंग द वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर इन इक्वेशन 5, जो है ये, राइट, तो लेफ्ट साइड पे ये आ जाए. पहले तो हम लिख देते हैं, ये इनका वही कैलकुलेशन बहुत भयंकर जा रहा है. तो इधर जो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर जो नौ नौ वाले में आया वो इधर डालना है, तो इधर जो, तो इधर बस लेफ्ट साइड पे डाल देना, फिर काट कुट के देखते क्या आती है. तो एच में तो बहुत भयंकर इक्वेशन आ रहा है. तो इधर एच म्यू स्क्वायर कट गया, एच म्यू स्क्वायर कट गया. अब क्या है ना, दो दो भी कट गया सब जगह से. हम्म, अब क्या, एम सी स्क्वायर into h mu minus h mu dash the whole square is equal to h mu into h mu dash minus h mu into h mu dash cos phi. तो इसे क्या हो रहा है ना, एच म्यू माइनस एच म्यू इंटू एच म्यू डैश कॉमन आ रहा है. अरे वो है ना, हाँ एच म्यू टू एच म्यू टू टू तो कट गया, टू तो ये लोग डिवाइड कर देते बाद में, ठीक है टू टू कट गया बस. एच म्यू तो एच म्यू डैश कॉमन आ गया, वन माइनस कॉस फाइव, और दूसरे साइड एम सी स्क्वायर एच म्यू माइनस एच म्यू डैश टू एच स्क्वायर सी स्क्वायर से दोनों जगह, ये दोनों जगह एक टू तो है ही, तो टू तो कट ही जाएगा. सी स्क्वायर दोनों जगह है नहीं, पर इन्होंने क्या ही किया क्यों ही किया मालूम नहीं. तो कर दिए, जो भी है कर दिए, टू एच स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए. तो व्हाट विल हैपन इज एम सी बाय एच इंटू म्यू बाय सी माइनस म्यू डैश बाय सी इज इक्वल टू म्यू बाय सी म्यू डैश बाय सी मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस. ओ भाई भाई भाई, ये कैसे आ रहे, ये बहुत घटिया है, मजाक भी नहीं. और एच सी बाय लैम्बडा होता है, ठीक है, तो एच सी बाय लैम्बडा उधर दिख रहा है, तो सी बाय लैम्बडा हो गया वन बाय लैम्बडा सी बाय बी. तो उधर वन बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा डैश इक्वल टू वन माइनस कॉस फाइ लैम्बडा बाय लैम्बडा डैश. अब इधर उसको क्या किया, थोड़ा रीअरेंज कर दिया. कैसे, तो एच बाय एम सी उधर लेके गए, इधर उसको लेके गए, तो लैम्बडा लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा लैम्बडा डैश इंटू वन बाय लैम्बडा माइनस वन बाय लैम्बडा डैश इक्वल टू एच बाय एम सी इंटू वन माइनस कॉस. ये तो राइट साइड वन एच बाय एम सी इंटू वन माइनस कॉस तो आ गया इधर लिखे. अब इधर कैसा है, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, कौन लैम्बडा लैम्बडा डैश कट जाता है, लैम्बडा लैम्बडा डैश दोनों तरफ से ऊपर नीचे से इक्वल टू एच बाय एम सी वन माइनस कॉस फाइ. तो इधर से आ गया ना, एच बाय एम सी नोन एज थॉम्पटन वेवलेंथ. तो इधर से क्या आया, and value of electron for electron is equal to 0.0243 Armstrong, which is 0.0243 to 10 to the minus 10 meter. So lambda dash minus lambda equal to lambda c into 1 minus cos phi. ये बकवास इक्वेशन आ फाइनल इक्वेशन पहले दोनों तो फॉर्मूला इंस्टॉल सपोज द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. समझा. The quantum wavelength gives the scale of the wavelength change of the incident photon from equation 2.3. So that the greatest wavelength change possible corresponds to phi equal to 180 degrees. तो ये phi 180 पे ये cos phi
वन 80 90 हो गया, ये माइनस होना है तो प्लस वन, टू lambda चाहिए उधर। And the wavelength changes the twice the Compton wavelength because lambda is 2.4, okay basically इसको ऐसे लिखना है, unless for other particles owing to the resonance mass. Massive wavelength change in the Compton effect 4.85 to changes its magnitude more or less readily observed in X-rays. The shifted wavelength for visible light is less than 0.01% of the initial wavelength, whereas for X-rays 0.1 nanometer, it is several percent. X-rays lose energy when they pass through matter. Simple होगा। हाँ, नाइस था। कुछ तो नॉनसेंस था। अभी डीप ब्राउन की बचत खत्म। फ्लैश राइट ट्रांजैक्शन। अब टी रॉबी में जाने से पहले पानी पी लेते हैं। उसके बाद बकवास करके दिए हम चार्जिंग में डाल देते
मुझे बताइए। वो दही का लगता है, बट मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। मैंने तो एक दो ही फूल खाया था शायद। इसमें तो हम्म, मैं अभी फाइनली कैसे तो करके फिनिश कर रहा हूँ प्रॉपरली। मैंने पिछले इसमें प्रॉपर एक यूनिट खत्म करने के तैयार करा, एक प्रॉपर यूनिट। और अभी उसका यूनिट क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली करने का तैयार हूँ फाइनली। तो अभी मैं कैसे तो करके कर रहा हूँ। और थोड़ा मजा भी आ रहा है, थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में बातचीत करते करते सब। मतलब इसमें मैंने कल अभी बहुत देर से ना मेरा फोन ही बज रहा था। अभी अचानक जैसे चालू किया, बहुत मैसेजेस। इससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम लगता है, ये फोन ऑन रहता है ना तब दिमाग खराब। नॉट ओनली बिकॉज कि वो एग्जाम का तो उससे इतना मैसेज आता है ना कि नीचे से दिमाग खराब रखना था। और अभी कुछ ना कुछ तो आते रहेगा, अभी कुछ तो देखना है। वो क्या है ना, कुछ तो पाइथन का हमने भेजा है पढ़ने के लिए, और वो सब बेसिक बेसिक चीजें जो ऑलरेडी आती है यार, ये इतनी बेसिक आती है ना। प्रॉब्लम है कि मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं है प्रॉपर पाइथन, अभी जब मैं स्टार्ट हो जाएगा दिमाग और खराब। मिडिल में है कभी तो। वही उल्लू की दिक्कत है। बहुत लोगों ने पाइथन को लाना है, ये सब इसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा पूरा कोडिंग होने। ठीक है। जब मैं काम करता तो अभी खोला ही लिया, तो फिर वो हमारा एक ही चीज ठीक है। वो हमारा ने जो ये भेजा है प्रेयर, वो पढ़ लेता हूँ। हाँ, तो फिर उसको पढ़ के वापस कंटिन्यू करता हूँ। और फिर मुझे इसको पढ़ के फिर मैं थोड़ा वो भी खाएगा तो खाएगा नहीं, पापा को चाहिए ना वो बुलेट प्रूफ की के लिए। वो बटर, तो बटर यूज नहीं करता है। कंसोल मुझे अभी सच बोल तो भूख नहीं लगा है, पर मुझे ना थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, इसलिए मैं सोचा था कुछ नहीं नहीं, मैं सच बोलूं मुझे तो कुछ चीज़ है ना फ्रेश कर दे थोड़ा दिमाग को। मैं काम भी किया, थोड़ा पढ़ाई भी किया। ये कभी थोड़ा आइडिया वो कम भी खाया था तीन, वो मांगा के साथ उठ के, उसके बाद कुछ खाया नहीं मतलब। पर 9-10 बजे, बट अभी क्या है ना, मुझे ना कुछ तो ना रिफ्रेशिंग चाहिए। बट क्या है ना, मुझे कॉफी ठंडा कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ सच बोलो तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो थोड़ा दिमाग को सब कर दे। मैं सोच रहा हूँ वही प्रॉब्लम है तो। मैं तो गला भी खराब का था, दूसरा है कि वो रेनू का तो ही बेटर बने वो नींबू पानी। ठीक है, अभी के लिए फिर क्या करूँ अभी। वो यार वो रहेगा शायद ही।
बच्चों वो सब नहीं लेना आपसे। हाँ हाँ ठीक है वो कर। हाँ ठीक है, मैं अभी अपना का प्रार्थना पढ़ लेता हूँ और फिर वो पढ़ पी के चलता हूँ। चलो निकल बाहर भी गया। नहीं पप्पा इधर है, कब से बोल रहा काम पे जा उधर बैठ के कुछ तो हिब्रू लोग का वो ये वो है, चर्च बाइबल का कुछ तो मूवी देख रहा है। जैसे मोजेस आयरन का कुछ तो स्टोरी चल रहा है। वो उधर अच्छा है। हाँ वही तुम लोग उस दिन देख रहा था क्या? हाँ, इसमें कुछ और ही चल रहा है, इसमें वो जो फैरोस का स्टोरी है ना जिसमें मोजेस आयरन है, वही ब्राह्मणों को दिखा रहा है। हाँ ब्राह्मण को दिखा रहा है, मैं अभी काम कर रहा है उस क्या बोल रहा है, बटर मिल्क बना रखता है और अभी बात कम करता है। चल बाय। शांति से हम शांति से बैठते हैं। हाँ, मस्त हो। अच्छा यार। हाँ, लोग पानी की वजह से देख रहे हैं, खाना से देख रहे हैं, साथ होता है। हमें इस ढंग से आज तो और कोई और से it's not as if it was around the world. What is not worth it. So the people all that breath and resurrection and honor the glory and praise. All the creation bows down for you, Lord. Even because no other king of kings, the Lord loves, who has won the victory and has conquered death. The Bible says, but God has chosen the foolish things of the world to put to shame. The wise and the God has chosen the weak things of the world to put to shame. The things which are mighty. For the things understand. When you walk with God, you are never king. Thank you. Somebody said, it's all in the notes. I think we always put in the worship to have
With the Broglie hypothesis. Let's complete this. After this, we are going on to question answers. Okay. So, the Broglie hypothesis. From the study of the black body radiation, photoelectric effect, and Compton effect, it was necessary to assign the particle-like properties to radiation. The amount of energy associated with radiant particle is h mu, which is h c by lambda, where h, c, mu, and lambda are Planck constant speed of light, frequency, and wavelength, respectively, since mu lambda equal to c. Equation 1 proves that the radiation has particles like nature described by photons, and at the same time wave-like nature described by the wavelength lambda. Louis de Broglie asserted that this dual property is not merely confined to the photon or radiation, it can be attributed to any material particle. For this hypothesis, de Broglie relied on the special theory of relativity and the old quantum theory. These waves that arise out of matter particles are known as matter waves. The energy E and momentum P are of the photon related by P equal to E by C, which is h mu by C. Which is h by lambda. Therefore, the wavelength of a photon is therefore specified by its momentum according to the relation lambda equal to h by p, just rearranging it. De Broglie asserted that the nature is symmetric. Therefore, what is applicable to the photon can also be applicable to any other particle. For a particle of mass m moving velocity v, p equal to mv, so lambda is associated with the particle p lambda equal to h by mv. This is a for any particle. That is what that is. Not only for photons, any kind of particle. Then m is a relativistic mass, which is m is m naught upon root 1 minus v square by c square. So there's a condition to which why this will work. That is ये m naught is a rest mass. जब वो रेस्ट है क्या मास है अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. Also mu square upon c square. I think it's mu square upon c square. No, actually no. Wait a second. This has to be this has to be this has to be v, not because this is v. And not only because of that, it's simply because कि अगर m को m नॉट के इक्वल होना चाहिए ना, m नॉट इनटू समथिंग के इक्वल. उसके लिए ये जो पूरा है ना रूट के अंदर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर उसको कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इट हैज नो यूनिट. इसके लिए v और c का यूनिट सेम होना चाहिए. तो v इज बेसिकली वेलोसिटी, c भी वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट ही हो. Now the experiments demonstrate the wave properties of electrons. अभी हम इधर तो देख लिए, इधर भी देख लेते. तो ये तो वही सेम बता रहे हैं. अभी इसमें से आई थिंक ये इसमें से ही लिया है. हाँ तो यही पढ़ लेते हैं. एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी जो बोला था कि ड्यूअल प्रॉपर्टी है, अब वही देखते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा. Davison and German experimental verification of de Broglie hypothesis. Clinton Davison and Lester Germer in the USA and G.P. Thompson in the UK. So ये दोनों in the USA and G.P. Thompson in UK independently confirm the de Broglie's hypothesis because I think it is simply because कि de Broglie ने वो सेम टाइम में दो, एक यूके में और एक यूएस में सेम चीज चल रहा था और साइमल्टेनियसली कंफर्म हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, जब वो रजिस्टर करने आता है ना, तो उसमें रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है और उसको करने में जितना प्रोसेस जाता है शायद उस हिसाब से दो तीन लोग ऑलरेडी कर लेते हैं ना उसमें. तो इसीलिए साथ में भी हो सकता है. डेविस एंड जर्मर स्टडी डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम using nickel crystal. If the electrons are accelerated by a potential difference of v volts, it gains a kinetic energy by h half mv square equal to ev. वो जो ऊपर दिखा दे लेस देन इक्वल टू एम बी नॉट, ये इक्वल हो जाए. Where v is the velocity attained by the electron, v is very very less than c, which is being the light speed of light. The de Broglie unit of the electron is h v by mv, where h upon 2 m ev. बेसिकली इधर लिखे गए, राइट.
एमवी तो है। वेट, टू ईवी तो ठीक है सर। एमवी इधर से आ जाता है। ओके, सो आई थिंक बेसिकली हम क्या किया है, एमवी स्क्वायर इक्वल टू ईवी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ईवी बाय एम का रूट। वी इज टू ईवी बाय एम का रूट प्लस टू ईवी बाय एम का रूट, तो रूट एम रिटर्न हो गया, तो रूट टू एम ईवी। सिंपल, ठीक है। If you put the value of V from equation 4, thus figure lambda in terms of voltage V. Lambda in terms of voltage V. तो ये, so electron का beam आया, scattered beam crystal आया, and 44 this का basically experimental setup of the experimental arrangement is shown in figure 1.1a. The electrons from a hot tungsten electron that are collimated, basically hit an incident or normal on the crystals of which a crystal है. The intensity of which is a nickel crystal of the electron being scattered in all directions by the atom of the crystal. Okay, which are arranged, तो basically electron गया एक उसके अंदर के atom को hit किया और ऐसे beam deflect हुआ, which are arranged in a regular periodic fashion were measured as a function of the angle of scattering. तो जितना ज्यादा आई थिंक वोल्टेज डाला उतना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल बना, आई थिंक दैट इज व्हाट इट, और ज्यादा स्कैटरिंग हुआ। The results shown in the polar diagram 1.1, figure 1b. The length of the radius vector is proportional to the intensity of the scattered beam. ठीक है, length of the radius vector is intensity of the scattered beam. ये I think ये radius vector. And the angle of the radius vector on the y-axis is the angle of scattering. इसका result show that the length of the peak increases as it is for phi equal to 50 and v equal to, तो ये d है। इसमें तेरे क्रिस्टल पे आया, इधर मारा। अरे यार इधर फिर पूरा वो बकवास में चलने वाला है। अरे यार ये तो वेव्स में चले गए यार, ये दिमाग खराब। ठीक है, तो ऐसे तो कर लेते, तो एक बार ये हो गया, कंटिन्यूएशन थोड़ा बहुत होता है। तो ये जो है पूरा ये जो भी है पूरा इधर से लिया, तो इधर से ही पढ़ना बेटर है। तो अभी ये भाड़ में आने दे, ये अब ये जो बचा हुआ पूरा इधर से ही पढ़, नोट से। तो हम इधर तो आ गए थे। तो ये तो है। नाउ the planes are shown in figure 2 where d is the distance between the consecutive atoms and small d is the interplanar separation, तो ये planes के बीच में और ये atoms के बीच में। The Braggs conditions for constructive interferences n lambda equal to 2d sin theta, जो अब optics में पढ़ता है 2d sin 90 minus alpha theta, because कैसे बताए, ये 90 है पूरा प्लेन के साथ, तो थीटा 90 माइनस alpha, तो जस्ट 2d cos alpha, 2d sin theta 2d cos alpha, फिर इससे समझ आता है कि जो d है, d है वो है d sin alpha ना, तो d है d sin alpha, ये sin alpha, ये पूरा d है, तो d इक्वल टू sin alpha इधर से आ जाता है। और क्वेश्चन 6 और 7 कंबाइन करके हमको मिलता है ये d का थिंग बदले वो लिख देते हैं, n lambda equal to 2d sin alpha cos alpha, which is 2d sin 2 alpha, 2 sin alpha cos alpha sin 2 alpha,
एन लैम्बडा इक्वल टू डी साइन फाइव, टू अल्फा, क्योंकि टू अल्फा जो है वो फाइव होता है, अगर हमें बताएंगे। तो एन लैम्बडा इक्वल टू डी साइन फाइव फ्रॉम एक्स डेटा नोन फॉर निकल डी इक्वल टू 2.15 एंगस्ट्रॉम, देखो 54 वोल्ट पे 550 डिग्री, फाइव मालूम है, डी मालूम है, वोल्ट भी मालूम है, लैम्बडा है 1.65 फर्स्ट ऑर्डर, तो 54 इलेक्ट्रॉन to, so the standard value equation 5, we get lambda equal to 1.66, तो वो इक्वेशन से भी जो ऊपर आया था, तो बहुत सेम एक्सपेरिमेंटल एंड डेविसन जर्मन के ऊपर जो हमने डी ब्राउली हाइपोथेसिस पढ़ा था, उसमें जो ये आया था 5 एक्सपेरिमेंटल एंड ये जो आए हैं वैल्यू खुद से। भाई साहब साहब, ओ माय गॉड, ये वीडियो भी देख लेते हैं। ऐसे मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ। कि शायद कुछ नहीं था उसको, कुछ सुना था। चलो, हाँ 13 पे आ गए, खत्म हो जाए भाई, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए तो फिर इस क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं ना, लिखते नहीं है, तो समझते हैं कि ये नोट्स और पीपीटी में से कौन सा पार्ट आने वाला है, वो आंसर को आंसर दे, तो अभी थोड़ा फॉर्मुलेट कर सकते हैं आंसर, उससे आंसर आगे बढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, खत्म करेंगे एंड फिर जाते हैं थर्ड यूनिट, सेकंड यूनिट में, उधर सेकंड यूनिट प्रॉपरली करते हैं। वैसे तो हम लोग सर करते हैं, बट हम लोग पढ़ी लेते हैं, करना ही है बड़े। इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस डबल स्लिट एस्पेक्ट, रिचर्ड फेनमैन, आपको फेनमैन टेक्निक वाला वो था जो पढ़ना चाहिए, कितना 1000 घंटे हाँ, तो मास वैल्यू यूनिट 10,000 आवर वाला बनता है। Described electron diffraction as a phenomenon which has in its heart of quantum mechanics. He went on to describe a thought experiment to help illustrate the phenomena of a wave-particle duality, which is a postulate that all particles exhibit both wave and particle. This I already explained. Feynman's thought experiment is summarized in the figure below. Sending particles to a double-slit apparatus one at a time results in single particles appearing on the screen. Remarkably, however, an interference pattern emerges when these particles are allowed to build up one by one. Probability distribution in these three scenarios: electrons traveling through slit 1 to slit 2 close P1, electrons have to slit 2 with slit 1 close P2, and electrons have to both slits P1 2, confirms the quantum mechanics superposition principle of wave propagation. तो इधर आए, डिटेक्टर है ये, काइंड ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग है, इधर P1 पे ऐसे, P2 पे ऐसे, और दोनों पे ऐसा रिपल इफेक्ट आ जाता है। उसका नाम सुन आए हैं हाइजेनबर्ग साक्ष्य मूविंग पार्टिकल। आई थिंक व्हाट आई डू इज फिनिश दिस, ये जो जितना भी पूरा है, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, ठीक है, खाने वाने का जो भी है, एंड उसमें आई ट्राई टू सेट अप द क्वेश्चन आंसर्स, एंड फिर वो ये करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ब्रेक नहीं लेते, वही स्टार्ट कर देते, फिर मुझे ऐसे खाना है, 1 बजे तक ही खाना है।
तो फिर उधर आराम से नींबू पानी में खाना वाना खा के फिर बैठ के वापस करते हैं, खत्म करते हैं। फिर सेकंड यूनिट थोड़ा स्टार्ट करते हैं, बट फिर एक बंद कर दूंगा क्योंकि फिर मुझे जाना है क्या बोलते ड्राइविंग पे। कल टेस्ट है ड्राइविंग का। आज फाइनल फाइनल नहीं बोल सकते क्योंकि मेरा अचीव हुआ नहीं 20 दिन पर there's one more day, like few more days left. I think 1 or 2 more days, but technically can go for the exam now. I'm going for the test to the RTO in Vadala. So let's see what happens. First of all, Heisenberg's uncertainty principle. A moving particle is associated with a de Broglie wavefront, so it is better to represent it by a group of waves rather than a localized entity. There is a fundamental limit to the accuracy with which we can measure the properties of the particle, such as its momentum and position. When the de Broglie wave group is very narrow, the position of the particle can be easily estimated within the width of the group. But the wavelength is very hard to establish. Figure 1. If the wide of the group is wide, what? Okay, width of the group is wide, the wavelength can be easily established, but the particle may be anywhere within the wide width of the group. मतलब इधर लैम्बडा तो इतना नींद आ रहा था। ये कर लेते भाई, कर लेते चेस तो करना ही है। There's a lot of formulas. Oh my god, टॉर्चर, ये एंड में टॉर्चर हो रहा है क्या आपको? इतना ज्यादा फॉर्मूला और इतना ज्यादा बकवास लिखा। ओके, इसलिए काम कर रहा हूँ मैं थोड़ा ब्रेक ही ले रहा हूँ, तो बात से लग गया होगा। तो बस